We'll take a trip to this ashram. So my first question, सनातन धर्म में वो प्रोसेस है. प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में काफी सुन रही. I love your clothes. It's a brutal murder. जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए. This is a very powerful answer. People are committing suicides. Endless happiness, only happiness, 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 blissfulness. धर्म में केवल लव है. But we wanted to know, how is he a person in his personal life? Namaste Bharat. This is our podcast. It's called Happiness Podcast. And in this podcast, what we do is we travel across the world and we meet eminent personalities across the world and we try to understand what is the pursuit of happiness. They are these people who have achieved success in their lives, and they are the leaders, they are the guiding light of the societies. Me, I come from India, but I live in London. I work in media, and I have my friend who has also come from United Kingdom. She works in social care. And we decided some time back that there is so much unhappiness and problems in the world, especially in West. There is wars going on, people are committing suicides, there's recession, and then in all this unhappiness, a lot of people are looking towards India to be a guiding light, to be a source of happiness. And what we decided was, we'll take a trip to India, and then we'll take a trip to this ashram of this personality we have been reading so much about. He is one of the biggest spiritual leaders in India. He's very outspoken. People love him. He addresses gatherings of thousands and thousands. He's a big political influencer. But we wanted to know, how is he a person in his personal life? And that's what brought us here in this ashram. His ashram is called Anandam Dham. Anandam Dham means the place of happiness. It's a happy place. And the personality is Sadguru Shri Riteshwarji Maharaj. And we decided that it will be great to get his thoughts, his wisdom, and his guidance to not just to us, but the people in the West as well, in terms of how can this one ashram from India become a source of light, not just in the city, not just in the country, but all over the world. I'll hand my mic to this friend of mine, and she can introduce herself, and we can continue this podcast. Hello, so my name is Elaine. I am from the UK and I have a background in social work. And for me, I am a believer that man, women and children should all have equal rights in this life. As my friend was saying, there's a lot of anger, there's a lot of toxicity in this world, and I'm a believer in calmness, and I'm a believer in terms of spirituality being the solution. I'm attracted to Hinduism because I think it's a very kind religion. This is my very first experience of being in an ashram. I've heard a lot about Guruji, so I'm really excited to be here. So my first question to you is, why would you recommend Hinduism to someone? नमस्कार. मैं बहुत स्वागत करता हूँ. I am very happy to meet you, Elaine and Saurav. The Hinduism, you are asking me about Hinduism. Exactly. The question is, what is Hinduism? Hinduism जीवन की पद्धति है. The happiness प्राप्त करने के लिए, happiness के लिए एक ऐसा सिस्टम है, जिस सिस्टम में अगर आप आ गए तो आपको happiness मिलेगा, बट ये happiness endless होगा. Happiness, then sadness, happiness, then sadness. It's not. Endless happiness, only happiness, 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 blissfulness. हिंदुइज़म ब्लिसफुलनेस का की है, डोर है, दरवाज़ा है. और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आके कुछ दिनों में इन्होंने जो कुछ भी सीखा है, देखा है, वो अभी बहुत थोड़ा है, बहुत लाइट. पर जैसे जैसे आप डेप्थ में जाएंगे, जैसे जैसे आप इसके भीतर जाएंगे, तो आप सोचेंगे ये कोई सेक्ट नहीं है, ये कोई पंथ नहीं है,
बल्कि वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ हैप्पी लाइफ। या कोई संप्रदाय नहीं, कोई अलग से ये रिलीजन नहीं, ये हर आदमी के लिए, हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए। हिंदुइज़्म माने सनातनिज़्म जो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, द होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली, हिंदुइज़्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आप हिंदुइज़्म में आएंगे तो आप स्वयं इसका उत्तर दे पाएंगे कि यस, हिंदुइज़्म ही हैप्पीनेस का सच्चा दरवाज़ा है। I'll just translate that very briefly on what Guruji said. So Elaine had a query because it's the first exposure to what Hinduism is, and she's like, what Hinduism is. And what Guruji said, Hinduism, first of all, should not be confused as being a sect, a religion, or anything. Hinduism is a way of life, and this is the way of life that leads you to happiness. But the key is it's not one or twice or thrice happiness, it is endless happiness. It is the door to endless happiness. And every person as of now on the world, they achieve happiness in like instances for some time. And again, they go back to their sad state. Hinduism is one, you call it way of life, that if you follow it, adopt it, and live it, you have this sustained endless happiness. And then we have in India, we call it Vasudev Kutum. The whole world is ours. So I think in very, very crisp manner, what Guruji also said, that Elaine has spent few days in India, few days in the ashram, and she's already experiencing this good happiness and blissful in just a couple of days. If she stays and adopts and kind of lives it for a longer period of time, she'll be able to achieve that mark of endless happiness. Thank you. What's your next question? So I'd like to make a comment. Yes, I've been at the ashram a few days, and it's fantastic. I do feel there's a very pure energy here, and it's very calm. And I'm obviously learning more about Hinduism. So I have to say, Guruji, in the days that I've been here, I love your clothes, the best outfits. My next question is as a guru, how can you help me? How can you help people? Yes, I am very happy, Elaine, and मुझे भी ऐसा फील होता है कि एक प्योर सोल हमारे पास आया है। मैं भी फील कर पा रहा हूँ जब आपके साथ बैठा हूँ। मुझे लग रहा है एक प्योर सोल, एक जो शांति की खोज में, और ऑलरेडी जिसके पास शांति है, ब्लिसफुलनेस है, वो बैठकर अपने ब्लिसफुलनेस को और बढ़ा रहा है और उसको बांट रहा है। ये प्लेस इसलिए ज़्यादा हैप्पी है कि यहाँ पर जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग, वो हैप्पीनेस की खोज में आते हैं। और यहाँ सब एक मास्टर के, लिविंग मास्टर के डायरेक्शन में, जो हमारे एंशियंट वेदास हैं, जो हमारे ऋषि हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने बहुत सारे सूत्र लिखे हैं, फॉर्मूलाज टू हैप्पीनेस, उसको हम फॉलो करते हैं। मेडिटेशन, पूजा, फास्टिंग, उपवास एंड सो तो हमारे भीतर में वो हैप्पीनेस धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है, सोल में है, अंदर में है। हम उसको डिस्कवर कर रहे हैं, कहीं से मिल नहीं रहा है, हमें कोई दे नहीं रहा है, वो है मेरे भीतर ही। बट हम एक प्रोसेस मिला है मुझे, हिंदुइज़्म में वो प्रोसेस है, सनातन धर्म में वो प्रोसेस है, जो आपके भीतर के रियल मैं को, जो आप हो और आप आनंदित हो, प्रसन्न हो, खुश हो, ऑलरेडी हो। हमने बहुत सारी कोशिशें की हैं दुखी होने के लिए। बस जब हम इस आश्रम में आते हैं, श्री आनंदम धाम में, या किसी लिविंग आइडियल के पास जाते हैं, तो हमने जो कोशिश करके अपने ऊपर सैडनेस लाया है, सॉरोज लाए हैं, उस सॉरोज को वो रिमूव कर देते हैं। वो हेल्प करते हैं आपको कि हु आर यू, आप हो कौन। और जैसे ही आप इसको अचीव करने लगते हो, रिसीव करने लगते हो, तो आपके जीवन में बहुत खुशी आ जाती है, आनंद आ जाता है। और अगर आप खुश हो तो आप यूके में रहो, यूएसए में रहो, भारत में रहो, कहीं जाम्बिया में चले जाओ, सऊदी अरेबिया में चले जाओ, आपके द्वारा खुशी ही बटेगी। अगर आप दुखी हो तो आप जहाँ भी जाओगे वहाँ दुख ही बटेगा। आई एम वेरी हैप्पी, आप इतनी खोजी हैं
और यहाँ पर खोज करने आई हैं, और मैं भी बहुत एक एनर्जी फील कर रहा हूँ आपके साथ बैठकर। So I'll very quickly translate like the wise words of Guruji. What he said basically, like Elaine asked in terms of how can a guru help someone. First of all, like he complimented that you have a very positive energy. He can feel that a pure soul has come all the way from a very far land in terms of quest of spirituality and happiness that has brought you here. Like what he says is, first of all, you need someone who is a living master. And the way why someone is a living master, because in India, our ancient scriptures and Vedas, which has been written thousands and thousands of years ago, have all the ingredients written in terms of what will help you to achieve that happiness. So either you talk about chanting mantras, you talk about puja, you talk about fasting. These are key elements that lead you to a pure life. What Guruji also said, that we search for happiness everywhere else, but the happiness is inside you. So the search should be within yourself. And the search that takes you within yourself, he becomes the guide who takes you within yourself. And then once you go in yourself, you identify that these are the things, these are the practices, these are the things that you have to do and not to do to become happy. You can be a happy soul, and you can be either in UK, or you can be in USA, you can be in Zambia, you can be in Afghanistan. You will be a happy soul who will emit happiness. And if you are an unhappy person, you can be in New York, London, you can be anywhere, you will spread unhappiness. So most of us struggle with that. We change one place to another place in quest of happiness. We change one guru to another guru in quest of happiness. That does not work. So what he does is, what a guru does, he becomes that guide that takes you inside, and he gives you those ingredients that, okay, you do this for happiness. And that's what I think the meaning of guru for me as well is, someone who takes you from darkness to the light. So the darkness to the light inside. Does that answer your question? That does answer my question. Thank you. Right. But her first guru is herself. See? Yes. बिकॉज उसके भीतर से आवाज़ आई है कि मुझे बहुत हैप्पीनेस चाहिए जी, मुझे बहुत हैप्पीनेस में जीना है। तो पहला गुरु तो भीतर में ही है जो ये कह रहा है कि मुझे बहुत हैप्पीनेस चाहिए और राइट पाथ पे चल के चाहिए। मुझे कोई क्राइम से नहीं चाहिए, करप्शन से नहीं चाहिए, एक राइट पाथ पे, एक रिलीजियस पाथ पे चल के, मतलब ट्रूथ पे चल के, लव पे चल के मुझे चाहिए। तो वो अपनी गुरु स्वयं हैं। अब वो अपनी गुरु स्वयं हैं। जब यूके से वो आ रही तो किसी ने उनको बोला होगा भारत आइए, बहुत अच्छा लगेगा। अब भारत आइए अच्छा लगेगा, बट उनके भीतर में वो बात है कि हाँ, भारत के बारे में मैंने सुना है, बहुत अच्छा जगह है। तो जब उनका मन हुआ भारत आने का, तो वहीं से बहुत सारे गुरु उनको मिलना शुरू हो गए। एयरपोर्ट पे उनको गुरु मिला, उनको कहाँ इमिग्रेशन पे उनको गुरु मिला, फिर यहाँ पर आकर के वो ऑटो रिक्शा में चल रहे हैं तो वहाँ वो गुरु के रूप में उनका काम कर रहा है। वैसे ही जैसे वो सब यहाँ भारत में इस जगह तक पहुँचाने में उनके गुरु बने, अब वो ट्रूथ तक ले जाने के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी जो लव को समझता है, जीता है, ट्रूथ को समझता और जीता है, वो उनसे मिलेगा और वो उनको आस्क करेंगी, पूछेंगी, तो उनको ट्रूथ, लव एंड एंडलेस हैप्पीनेस तक ले जाएगा। So this is a very powerful answer, and I think like what he basically said was, so first of all, when you decided to come to India and that curiosity within you to go for a spiritual quest, so that's you became your guru yourself. And then in your path to India, right from like leaving your home to going to airport, going through immigration check, every person became like a connector to India. You took a taxi, the taxi driver, you went to the airport, the flight, the pilot, then you went for immigration check, and then you're going to an auto rickshaw. Everyone who brings you here eventually becomes like a guru in installments. And then once you have reached here, Okay. then he is the person who was, people have brought you here, and then he's the person who is going to be your truth towards the light. You know? So like guru, 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 and then you meet the ultimate guru. Does that make sense? नेक्स्ट, अच्छा आप पूछोगे? जी जी जी. So my question is, गुरुजी एक बिलीफ बना हुआ है कि जितने गुरु रहते हैं वो मतलब जो दुनियादारी जिसको हम बोलते हैं, सांसारिक जीवन जिसको बोलते हैं,
उन सारे चीज़ों से उनको दूर होना पड़ता है। और या तो आप बोल दीजिए कि जैसे शादी करना, गृहस्थ आश्रम में बसना, या एक हॉबी होता है कि ये गुरु जीन्स क्यों नहीं पहनते हैं, क्योंकि पूरी इंडिया जीन्स पहन रही है, तो गुरु जीन्स टी शर्ट पहन के क्यों नहीं रह सकते हैं। तो ये क्या है कि क्या गुरु बनने के लिए, अध्यात्म में जाने के लिए, क्या इन सारी चीज़ों का त्याग करना ज़रूरी है? क्योंकि अगर, और हम ये भी देखते हैं कि बहुत लोग सारी चीज़ें करते हैं और वो भी खुश रहते हैं, तो क्या गुरु बनने के लिए जीन्स पहनना छोड़ना पड़ेगा? क्या गुरु बनने के लिए गृहस्थ आश्रम से त्याग देना पड़ेगा? क्योंकि एक इंसान की छोटी लाइफ होती है, उसमें लगता है कि सारा चीज़ ही कर ले, जैसे हम जैसे इंसान नॉर्मल हम जिसको बोलते हैं, तो उसमें आपका क्या राय है? वेरी नाइस क्वेश्चन सौरभ। देखिए, आपने पूछा कि गुरु बनने के लिए क्या वर्ल्ड से डिटैच होना पड़ता है। अगर हम वर्ल्ड से डिटैच हो गए तो वर्ल्ड के किस काम के रहे। जी। अल्टीमेटली हम इस वर्ल्ड में आए हैं, हमें जन्म इस दुनिया में मिला है, इस दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ हमें हैप्पी रहना है। अगर हम दुनिया से अलग जाके हैप्पी हो भी गए तो फिर सब लोग हैप्पीनेस चाहते हैं, वो सब लोग वहीं पहुंच जाएंगे और फिर एक नई दुनिया वहाँ बन जाएगी, तो दुनिया छूट तो पाएगी नहीं। एक नई दुनिया का क्रिएशन हम जरूर कर लेंगे। डिटैचमेंट वर्ल्ड से नहीं करना है। डिटैचमेंट लोभ हैं, क्रोध हैं, जो अनवांटेड चीज़ें हैं जिनको हम समझते नहीं हैं, जिनका अगर एक्शन हम करें तो बहुत अच्छी बात है राइट वे में, पर रिएक्शन से डिटैचमेंट होना चाहिए। हर बात का रिएक्ट हमें नहीं करना है। अब गुरु बनने के लिए, गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जहाँ प्रॉब्लम्स हैं सॉल्यूशन, उसको गुरु बोलते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो रोज़ थाउजेंड्स नहीं, लैक्स आपके विचारों में आते रहते हैं, मस्तिष्क में आते रहते हैं। एक एक मिनट में लाखों विचार आपके मन में आते हैं, तो कितनी सॉल्यूशन ढूंढेंगे आप। तो इन सब विचारों के उठने के कारण जो भीतर में उथल पुथल है, जो तकलीफ़ें हैं, जो दुख है, उसको पूरी तरीके से रिमूव करने के लिए हमारे एंशिएंट ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, उन वैज्ञानिकों ने, वो साइंटिस्ट हैं, हमारे मन के, हमारे सोल के, हमारे बॉडी के भी साइंटिस्ट वो हैं। वो अच्छा खाना सिखाते हैं, अच्छा रहना सिखाते हैं। किस ऋतु में क्या खाना चाहिए वो हमें आयुर्वेदा बताता है। कैसे हमें जीना चाहिए, वर्ड्स चैंटिंग क्या है, वो हमारे भीतर क्या प्रभाव डालता है, ये हमारी वेद की ऋचाएँ बताती हैं। तो ऐसे जितने भी बुक्स हैं, जो कुछ भी उन्होंने फील किया उसको उन्होंने लिख दिया, वो हमारे काम आ रही है। आप सड़क पे जाते हैं तो जिसने पहले डिस्कवर किया हुआ है कि राइट टर्न में ये दिल्ली आएगा एंड ये टर्न में फरीदाबाद आएगा, तो उसने मेहनत किया हुआ है, वो जाना है, उसने जाके बोर्ड लगा दिया। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी है कि आप पहले जाओ, ढूंढो, फिर नया बोर्ड लगाओ। नहीं, इसके बोर्ड से मैं कैसे जाऊंगा, मैं नया बोर्ड लगाऊंगा तब मैं फरीदाबाद पहुंचूंगा। तो ये आपका वेस्टिंग ऑफ योर टाइम है एंड वेस्टिंग ऑफ योर लाइफ है। वहाँ एक इंडिकेशन है। ये जो शास्त्र हैं ना, ये इंडिकेशंस हैं, हमें मिले हुए हैं किसी के बहुत 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 अनुसंधान के कारण। तो उस अनुसंधान का हम लाभ उठाते हैं। और गुरु बनने के लिए न कपड़े महत्वपूर्ण हैं, न लाइफ स्टाइल आपका महत्वपूर्ण है कि आप कपड़े ये नहीं पहन सकते। बिकॉज आई एम कंफर्टेबल इन दिस क्लॉथ, दैट्स वाई मैंने इसको धारण किया हुआ है। अगर मैं जब स्टूडेंट था, मैं भी जीन्स पहनता था। मैं जब अभी भी हमारी कभी इच्छा होती है और कभी हम पहन के बाहर निकलते हैं, तो उससे कोई तकलीफ़ नहीं है। अब ये एक प्रश्न बड़ा और अच्छा है, हमारे हिंदुइज्म में लोग पूछते हैं प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाएं। तो लोग मीट्स के बारे में तो समझ में आता है कि वी हैव नो राइट्स टू किल एनी अदर पर्सन, पर्सनैलिटी और एनीबॉडी। एक्सेक्ट्स को ही मारना ठीक नहीं, इंसेक्ट को ही मारना ठीक नहीं है मेरे लिए, वो भी अपने जिह्वा के लिए, खाने के लिए। जबकि उससे ज़्यादा अगर प्रोटीन की बात है तो आपको पता ही है कि उससे ज़्यादा प्रोटीन हमको मिल जाते हैं सोयाबीन में। 50 ग्राम जो आपका मीट है वो 50 ग्राम सोयाबीन में उससे ज़्यादा है, मूंगफली में ज़्यादा है और उसके उत्पादन में भी बहुत कम सोर्स लगते हैं। पृथ्वी को बहुत कम चीज़ें इन्वेस्ट करनी पड़ती हैं। 50 ग्राम 1 किलो मीट के लिए 70,000 लीटर जल तक को खर्च करना पड़ता है अगर पूरा जोड़ा जाए। कितने ग्रीन पत्ते ये वो खिला के सब उसको तैयार किया जाता है एक बकरे को, एक मीट को। तो अगर इस दृष्टि से आप कहते हैं, इस दृष्टि से बहुत साधारण चीज़ में आपको प्रोटीन्स मिल जाती हैं। ये हमें कौन सिखाता है? ये हमको वेजिटेरियन या वेगन्स बन के वो हमें सिखाते हैं। जिन ऋषियों ने ये सीखा है कि मैं जंगल में भी रह के इतना बलिष्ठ हो सकता हूँ,
इतना आनंदित हो सकता हूँ। तो ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये कहीं कोई रिलीजन, कास्ट, सेक्ट की कोई बात ही नहीं है। हैप्पी जीने का एक तरीका है और दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति इसको अपना सकता है। यहाँ कोई हिंदुइज़्म, क्रिश्चियनिज़्म, इस्लामिज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इसकी कोई बात नहीं है। बात है कि हैप्पीनेस कैसे होंगे, कैसे हम मस्त रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। तो कपड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं, बट ज़रूरी है कि आप पहनेंगे तो आप आनंदित रहेंगे। मैं बहुत आनंदित महसूस करता हूँ, मुझे जीन्स में आनंद आएगा, मैं उसको पहन लूँगा। बट एक चीज़ और है, अगर आप देखेंगे कि इन कपड़ों में बॉडी को जितने कंफर्टेबल, और ये कपड़े जो वो मोटे मोटे कपड़े पहना करते, वो सूती कपड़े पहना, कॉटन पहना करते, तो उसमें बॉडी आपके चमड़े को कितना रिलैक्सेशन मिलता है। और आप जब वो टाइट कपड़े पहन के चलते हैं तो आपको ही पता होगा धीरे धीरे आपके नर्व्स ये वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ें बढ़ती हैं। तो इस स्टाइल के लिए अपने लाइफ से खेलना मुझे लगता है ये ठीक नहीं होना चाहिए। बट अगर कोई लाइक करता है तो अप्रिशिएट इट, वो उसको ज़रूर कर सकते हैं। So I'll just summarize it, and it is a very powerful answer that Guruji has given. Along with it, it'll remove a lot of like misconception. What I asked him basically is to become a guru. Like, do you have to dress in a certain way? Because people have an expectation that a guru has to be dressed up in a certain way. He can't wear a jeans. He can't do this, that. And I think, like, in summary, the answer that he gave, first of all, is, again, it goes back to the root, which is the answer is in Hinduism. It's not written in your Vedas that you can't wear t-shirt and jeans. He is very much comfortable in what he wears. It's comfort. It allows him to do his best. It allows him to give his best. And so when he was in his university, he had a school and university days. And a lot of people will be surprised that he has wore jeans before. So, but it was that time, and now times have changed. This is what makes him like so comfortable, that allows him to kind of deliver and kind of give service to people. Second thing he mentioned, it's a very important point, that he keeps on referring to Shastra and Vedas, and Shastra and Vedas have been written thousands and thousands and thousands of years ago. But these Shastra and Vedas were written by people who now, and which is true, they were the real scientists. They have scientists जिसको मन की scientists बोलते हैं. These are the people who have researched your inner. They are the people who have researched your outer. These are the people who already know what problems will you suffer. Self-realized people. Self-realized people. And they have written the solution based on experience. It is not coming from any like mythology or anything. So they have written all the solution over years in terms of these scriptures. If you do this, this will make you a happy person. This will take you towards blissfulness. Now, if I wear a jeans, and of course it's true that if I'm wearing a jeans right now and I'm interviewing him and I'm not very comfortable, I wish I would wear something more comfortable, but jeans is very trendy and fashionable. So I've always used this in name of fashion, but it is, everyone who wears jeans knows it is not a comfortable attire. So I would rather wear something else. And finally, he touched on a very important point, and this is very important point he touched upon, like why we give up meat, or why being even a vegetarian or vegan is quite important. And if there's a scientific reason towards that. Let's say if you want to, there's so much buzz around like eating healthy, eating protein, having more protein intake in your diet, and then you have an option of getting protein from meat. You have a goat, you feed the goat, you feed grass, you feed water, you bulk up the goat, and then you basically eat meat and get some protein. You can get the same plant protein from soya bean without A, killing any animal, B, without investing so much. And if you look at it, it's like you want a product. The outcome is getting a protein. If you can get a protein from soya bean, which is plant-based, why do you need to do a lot of these things? And I think It's a brutal murder. Why are you murdering any goat and hens? Yeah. Why? Yeah. Have you right? No. No, right. And I think I'll give, because this subject of animal protection
and animal welfare is very, very, very close to Elaine. So I'll just let you answer the question. I completely agree. I agree that, you know, in terms of animal cruelty, and I think this capitalization, and that animals are just seen as like machines. You know, cows are born and their babies are taken off them as soon as they're born. And I think for me, the way forward needs to be, if there is going to be farming, let it be ethical, let it be better regulated. And that is one thing that really drew me to Hindu, you know, to learn more about this, is there's a kindness to people, there's a kindness to animals. My next question is actually about cows, because I know obviously cows are worshipped. And you know, I've spent some time now in India, but I see the cows on the streets. I see the street dogs as well, even the monkeys, and everyone is they're all eating rubbish, do you know? And I just wonder the way forward with that, do you know, and what your views are. Oh, Elaine, I'm very impressed and very happy to listen your questions. And actually, this is Hinduism. What are you saying? The kindness. This is Hinduism. I don't know by sect what you are. You are Christian or what? I don't know. No need. You are a kind person, kind people, and you are looking for everybody, every people, including whole world, including animals, planets. This is the real dharma, real spiritualism. This is spiritualism. Nothing cloths and this and this and this, nothing else. This is Vrindavan. And Lord Krishna is connected to cows. Gopal, his name is Gopal. गोपाल के देश में, गोपाल के राज्य में, गोपाल के स्थान पर काउज ईटिंग प्लास्टिक्स, पॉलीथीन्स, एंड इट्स वेरी, बहुत ज़्यादा दुख का ये विषय है कि गोपाल जो भगवान होकर भी, गॉड होकर, काउज को गॉड मानते थे, वहाँ पे पॉलीथीन खा रही हैं, खाने को कोई चीज़ नहीं है. बट नाउ इट इज़, हियर इज़ अ गुड गवर्नमेंट हियर, एंड दे आर ट्राइंग, एंड वी ऑल आर ट्राइंग to save cows and give him good food, their shelters. We are doing so many works. एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, मुझे प्रारंभ से ही, जब से मैं पढ़ता हूँ और स्टूडेंट था, तब से ही बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता इंसान को बांटने में, मनुष्य को बांटने में. मेरा एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य कैसे नॉलेजफुल हों, ज्ञानी हों. अगर आदमी ज्ञानी होता है, नॉलेजफुल होता है, तो उसके भीतर से धीरे धीरे वो हिंसा मिट जाएगी. वो आप अगर एक बार अपने फैमिली का दर्द, आपके फैमिली में कोई मारा जा रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, कोई डेथ हो रहा है, और उसको फील कर लिया आपने, तो आपने जीवन में फिर कभी मीट को या किसी चीज़ को, किसी भी पशु के मांस को देखकर आपके भीतर में घृणा आ जाएगी कि व्हाट दे आर डूइंग. और इसको ही हमारे धर्म में असुर और सुर बोलते थे, देवता और राक्षस. राक्षस ऐसा नहीं कोई सिंह बन गया, ऐसा बन गया. हमारे जो हैबिट्स हैं, मतलब एंटी ह्यूमनिज्म, उसको ही असुर बोलते हैं, उसको ही राक्षस बोलते हैं. और जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमनिज्म को, उनको बोलते हैं देवता, देव. उनको बोलते हैं मैन, ह्यूमन, गुड पर्सनालिटी, भक्ता, धार्मिक, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म को मानने वाले लोग. तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काउज़ के विषय में, एनिमल्स के विषय में आपके हृदय में बहुत प्रेम है, लव है आपके हृदय में, वो मेरे भगवान के हृदय में है, श्री कृष्ण के हृदय में. चूँकि मैं उनका फॉलोअर हूँ, तो मेरे हृदय में भी है. इन फ्यूचर हम लोग मिलकर इस पर और विराट काम करेंगे. आप, मैं, सौरभ और हमारे जैसे बहुत सारे पीपल जो एनिमल को लव करते हैं, ह्यूमैनिटी को लव करते हैं, इस वर्ल्ड को लव करते हैं.
हम सब स्माइल देखना चाहते हैं इस दुनिया में, एक सुंदर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। अगर जो लोग ऐसा नहीं चाहते उनकी संख्या जितनी है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमारी संख्या ज़्यादा होगी उनसे कि जो हम आनंद चाहते हैं। और अंतिम बात मेरा ये मानना है कि चाहे वो बुरे हों अच्छे हों, आनंद तो सभी चाहते हैं, ब्लिसफुलनेस तो सभी चाहते हैं, उनको रास्ता पता नहीं है कि किस रास्ते से आनंद मिलेगा। तो हमारे वेद, हमारे शास्त्र और हमारी जो लिविंग गुरु हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ लिविंग आइडियल की ज़रूरत है। लिविंग आइडियल, आप कहीं सड़क से जा रही हैं, आपको किसी स्थान पे जाना है, तो कोई स्टैचू आपको नहीं बता सकता। अगर आप कंफ्यूज हो गई तो स्टैचू ऐसे खड़ा है, आप उनसे पूछेंगी मैं कहाँ जाऊँ, तो कुछ नहीं बोलेगा। बट एक लिविंग मैन वहाँ पर होगा, वो बता देगा राइट टर्न जाइए, फिर लेफ्ट टर्न जाइए, आप वहाँ पहुँच जाएंगी। ऐसे ही कोई स्टैचू या कोई फोटोग्राफ आपको टीच नहीं कर सकता। आपकी ज़िंदगी में भी जितने प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम्स को हैप्पीनेस में बदलने के लिए एक लिविंग नॉलेजफुल मास्टर चाहिए, जो आपके प्रॉब्लम्स को सूत्रों के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा दूर करेगा और एक दिन आप हैप्पी फील करोगे। दिस इज़ द नीड ऑफ रियल स्पिरिचुअल लिविंग मास्टर। Thank you. I'll just summarize that. So basically, one of the key important thing was like she comes from outside, and she has heard a lot that cows are worshipped in India. But when you actually come on the ground, you see that there are like so many cows. By the way, Vrindavan is place of Krishna, of Gopal. This is where cows should be worshipped at a different level compared to any other city. But when you actually come to the city, you will see like cows eating garbage, cows eating plastic. There are monkeys on the street. There are street dogs which are treated really, really bad. And this is quite painful for someone who is like animal loving. So she asked Guruji, like, what is your take on that? And first of all, one of the first things Guruji said was, it's quite painful to see actually the place where you worship cow as your mother, and your mother is actually eating plastic all over. So there's a big difference between what you say and what you do on the ground. But fortunately, the current government in Uttar Pradesh, the current government headed by Mr. Yogi Adityanath, is taking this initiative of stopping this problem. There are a lot of cow shelters that is being created. The cows which are left destitute and with disease on the streets are getting taken care of. And it's a slow process, but it has already started. And he touched upon something which is written in like Vedas. And a lot of people, young people will be confused about it. We talk about Asur and Sur and Asur. So Asur is not someone you think as a monster with like those saying and all this. Any person who's born as a Asur means human. devil, he can understand? Asur is a devil. So it's basically written like devil and non-devil in ancient scriptures. So devil does not signify someone with like horns and stuff. It's basically if you're born as a human and you're doing anti-human activities, for example, killing someone and eating it, that's a devil, you know. And that's one of the reasons they say that, you know, people know all this, but you need someone who is a living ideal, someone who can actually take you through that. Okay, don't do this, do this, do this. You can't talk to a book or a statue. You can talk to a statue and you can be all knowledgeable. If people just talk to a statue and they thought that, okay, I've talked to a statue, I've read a book, and now I'll be happy, everyone would be happy. But everyone is unhappy. So one of the things is, because you have someone who has already taken that initiative, who is going to become a guiding force in your life, so it's good to have a living ideal, you know, a living master, where you have confusion in life. Even a question like, should I eat meat or not? A lot of people in India do eat meat, right? And Hindus do eat meat. Yeah. A lot of them do eat meat, and they call themselves Hindus. So this is a bit of a hypocrisy as well. So this is like how to lead that ideal life, including this. So that gets answered through Vedas, but the person who connects you is someone who's like a guru. Because you see, the Vedas were written like years and years ago, and there are thousands and thousands of pages. You can spend your whole lifetime reading the Vedas, and you'll be old and you'll be like, okay, what do I do with this information now? So what a guru does is, he basically extracts information from that, because he's read everything, and he's like, just do this, this, this. So you don't need to read the Veda. Just like a medical shop. You It's just, yeah. You go to the medical shop,
and you are feeling headache, and you need so many pills. It's mine. I am rich, and you take intake, and then you will die. Go. So you have to go senior doctor, चिकित्सक जिसको हम कहते हैं, जी, उनके पास जाएंगे, वो डायग्नोस करेंगे एक्चुअली कहाँ से ये दर्द हुआ, क्यों हो रहा है, थॉट से हो रहे हैं, पेट से हो रहे हैं, एसिडिटी से हो रहा है, गैस से हो रहा है, और वो डायग्नोस करके बोलेंगे ये 1 पिल्स आप जाकर के ले लीजिए, खाइए, आप ठीक हो जाएंगे। और आपने जाकर एक पिल्स लिया, उसको ठीक, यद्यपि मैं पिल्स पे बहुत विश्वास नहीं करता, मैं आयुर्वेद पे विश्वास करता हूँ, पर आयुर्वेद की ही चीज़ उन्होंने बता दी कि आप जाकर के ये पत्ते खा लो, ये पत्ते का रस निकाल लो। पर अगर हमको ये पता नहीं है और मैं अपने रीचनेस के कारण कि नहीं मैं महंगी दवाइयाँ खाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे हैं और हमने इतनी दवाई खा ली तो हम मर जाएंगे, पर डॉक्टर हमें बता देगा कि एक छोटा सा दवाई आपके इस प्रॉब्लम को दूर कर देगा। तो एक्चुअली द डॉक्टर इज़ गुरु, मेंटल डॉक्टर, हैप्पीनेस के लिए डॉक्टर, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसका डॉक्टर, उसको लिविंग मास्टर बोलते हैं। और वो केवल टॉक नहीं करते, केवल बात करने वाले नहीं, इज़ नॉट डायलॉग डिलीवरी उनकी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे बोल रहे हैं। तो हमारे एक्टर्स हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड में, वो हमसे बहुत अच्छा बोलते हैं, हमसे बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। दे सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, गुरु मीन्स सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। वो वेदास को जानते हैं, वो ह्यूमैनिटी को जानते हैं, उन्होंने जिया है उस चीज़ को, संघर्षों से सीखा है उस चीज़ को, अपने गुरु से सीखा है, अपने गुरु से सीखा है, और अब वो आपको दे रहे हैं। तो लिविंग मास्टर की ज़रूरत इतनी ही है जीवन में जितना एक छोटे से बच्चे को मदर की ज़रूरत है। Saurav talked about the Prime Minister, and I think in terms of politics in the UK, I'm just a bit cynical because there's been a lot of corruption and things like that, and I guess my concern is that politicians sometimes are out to meet their own needs and not the needs of the people. And I see that your Prime Minister comes from a very humble background. He comes from a background at sea, and I think that's good because the politicians in the UK all come from privileged backgrounds, and they're kind of set up to be the politicians of the UK. And I guess, you know, from my perspective, because you're already starting to discuss I as an outsider, I get an impression that he's bringing something different to this country, and I know he's a Hindu himself, you know. So I'm just keen to hear your impressions and your perspectives on him and his vision for India. और क्लियर करो। So what Elaine asked, basically उन्होंने पूछा कि ये यूके में पॉलिटिक्स चलती है, और यूके में जो पॉलिटिक्स है वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं या जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनका बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड होता है, बहुत हायर एजुकेशन पहले अटेन करना पड़ता है, उसके बाद बहुत महंगे कॉलेजेस में जाते हैं, उसके बाद वो उस लेवल पे पहुंचते हैं जहां उनको इस लायक समझा जाता है कि वो गवर्न कर सके। भारत में प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में काफ़ी सुन रही थी, पर इनको एक चीज़ जो बहुत ही इम्प्रेसिव लगा या बोलिए चौंकाने वाला लगा कि एक इंसान जो चाय बेचते थे, वो चाय बेचते बेचते इस लेवल पे कैसे पहुँचे कि वो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली देश को, जहाँ इतने सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, गवर्न कर रहे हैं और इतने आगे ले जा रहे हैं। और दूसरा ये, क्या इस काबिलियत में, क्योंकि वो हिंदू हैं, इसका भी कोई फैक्टर है? यस, हिंदुइज़्म एक बहुत प्यारा रिलीजन है और एक मत है जिसमें एक मनुष्य को ग्रो करने का बहुत चांस है, उसके लिए वो बहुत बड़ा बन सकता है। केवल वही नहीं, हमारे यहाँ शिवाजी एक सड़क पे खेलने वाले साधारण बालक थे, पर जब उनको एक लिविंग आइडियल मिला हिंदुइज़्म के थ्रू, वो इतने बड़े गवर्न करने वाले, और जो भी आउटसाइडर लोग यहाँ पर थे जो हमें इंडिया के ऊपर गवर्न करते थे, भारत के ऊपर, उनको उन्होंने खदेड़ा। और हिंदू एक महाराष्ट्र में मराठा राज्य का कायम उन्होंने किया। तो चाहे महाराणा प्रताप हो या कोई भी हो, हिंदू कोई भी राजा हो, हमारे बेसिक जो थॉट्स हैं उतने मजबूत हैं, हमारे प्रैक्टिस इतने अच्छे हैं, हम इतने काइंड पर्सन होते हैं, हम सबके लिए सोचते हैं,
हिंदू का अर्थ ही है, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हिंदू कोई एक रिलीजन नहीं है, बल्कि हिंदू एक जीवन पद्धति है। तो कैसे हैप्पी लाइफ जिया जा सकता है, वो जीवन पद्धति है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी एक टी सेलर थे और टी सेलर से बिकम ए प्राइम मिनिस्टर, तो ये यहाँ पर संभव है। दूसरी बात ये है कि ब्रिटेन में, यूके में या यूएस में, या स्पेशली ब्रिटेन में आपने कहा, यूके में, कि बहुत हाईली एजुकेटेड होना ज़रूरी है। यस, बट आई बिलीव दैट देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। हिंदुज़म इज़ इट्स सेल्फ एजुकेशन। जो हिंदुज़म की प्रैक्टिस करता है वो एजुकेटेड है। वो अगर लिटरेट कितना है मुझे पता नहीं, बट अगर वो प्रैक्टिस कर रहा है तो हैप्पीनेस, क्योंकि सभी एजुकेशंस के एक ही लक्ष्य हैं। एम्बिशन क्या है? एम बिकम ए हैप्पी मैन। हैप्पीनेस ही सबका लक्ष्य है पढ़ने का। कोई पढ़ के दरिद्र नहीं रहना चाहता, पढ़ के कोई दुखी नहीं रहना चाहता, पढ़ते ही हैं कि हम बहुत अच्छे बनेंगे, बहुत बड़े बनेंगे। तो हिंदुइज़्म के बेस में वो चीज़ें हैं कि आप अगर उसको प्रैक्टिस किए तो आप एजुकेटेड हो जाएंगे। आपको अलग से किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं, केवल लेटर्स आप पढ़ लो, ए टू जेड और अ से ज्ञ तक अगर आपने पढ़ लिया, कुछ व्याकरण पढ़ लिए और हिंदुइज़्म की प्रैक्टिस कर लिया आपने, सनातन का प्रैक्टिस कर लिया आपने, तो आप एक विराट मनुष्य हो सकते हैं। पर रूल करने के लिए नहीं, बल्कि सबकी सेवा करने के लिए, सर्विस करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी टी बेच के आए हैं, टी सेलर हैं, तो वो गरीबों के दर्द को समझते हैं, पुअर्स को कैसे जीते हैं। अब जब वो उस जगह पर पहुंच गए तो वो उसका प्रयत्न कर रहे हैं कि उनके दर्द को समझकर कैसे उनके दर्द को मिटाया जा सकता है। एंड लीडर क्वालिटी उनके भीतर में है। सो नाउ इट इज़ ही इज़ लीडिंग होल वर्ल्ड, लाइक पूरी वर्ल्ड को एक तरीके से लीड कर रहे हैं। लीड का अर्थ ये नहीं कि वो शासक हैं, लीड का अर्थ उनका काइंडनेस, उनका स्पष्ट बोलना, उनका ह्यूमैनिटी के लिए सोचना, और जो भी ये करेगा वो वर्ल्ड को लीड करेगा। बिकॉज पूरा वर्ल्ड चाहता है शांति, प्रेम, आनंद। तो जो भी इसको रिप्रेजेंट करेगा वही वर्ल्ड का लीडर होगा। और मेरे भारत में उन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं, बट उनके भी विरोधी हैं जो उनको लाइक नहीं करते, बहुत नंबर में है। तो आप अच्छा काम करते रहिए और अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, तो ईश्वर आपके लिए दरवाजे खोलता है। वो विराट जो एक एनर्जी है वो आपको एनर्जाइज करती है और वो आपको टॉप तक ले जाती है, ह्यूमैनिटी की सेवा के लिए, वर्ल्ड की सेवा के लिए। इन दैट वे आई अप्रिशिएट हिम, माय प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो जहाँ से जहाँ तक आए और वो जो कर रहे हैं भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, सनातन संस्कृति के लिए। कहने में तो लगता है सिर्फ भारत के लिए कर रहे हैं, पर भारत की जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, वो केवल भारत के लिए है ही नहीं, वो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए है, पूरे वर्ल्ड के लिए है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो भी कुछ कर रहे हैं हिंदुइज्म की प्रैक्टिस से, सनातन की प्रैक्टिस से, वो पूरी दुनिया के ऊपर लागू हो रहा है और सारी दुनिया को इसका लाभ होगा। अगर कोई ऐसा इन्वेंशन आप करते हो जिससे कोई रोग, कोई ऐसी मेडिसिन बनाते हो जिससे कोई रोग समाप्त हो जाए, तो आप यूके की हो, लेकिन वो पूरी दुनिया को मिल जाएगी, आप दे देंगी, तो पूरी दुनिया के लोग उससे लाभान्वित होंगे। तो गुड वर्क करते रहें, हम अच्छे मार्ग पर चलते रहें, तो हम भारत ही नहीं दुनिया के लीडर बन सकते हैं। और ऐसे ही लोगों को बनना भी चाहिए जो काइंड हार्टेड हों, जो सबके लिए सोचते हैं। I'll just translate that, and I think that was a very, very powerful answer that Guruji gave our Prime Minister Modi. Elaine was asking, just in terms of curiosity, that like she has heard a lot of good words about Prime Minister Modi, and also being a Hindu does help in terms of his delivery of good work. So what Guruji said initially is, first of all, because he is a Hindu, and Hinduism is a very important aspect, that leadership does not mean you are leading over people as a shasak, as a tyrant. It's you become a leader for the service of the people, for selfless service of the people. Yeah. And what he has done, he used to be a tea seller, and from that rank, he has rose to become the prime minister of one of the biggest countries in the world, and the whole world is now looking at India to lead the world. And this only comes because he was a tea seller. He understands the pain of the people who are very, very poor. So now he has become and reached that position. He's able to help. He's able to help that layer of people.
because he has lived that life. And he does this selfless service, and he believes in Sanatan Dharma and Hinduism. And again, it's a very important point that because he believes in it, and because he believes that God has given him this position to help people, it's not that he has become a leader. Understand the difference? So that's why he is doing what he does. The second very important point that you asked about education and literacy. So literacy, there's a big difference between literacy and education. Literacy is like basically you can read a lot of books. You can become a bachelor's degree, master's degree, PhD degree, and you can still be illiterate in life. You know, you can see a lot of people who have attained like very, very big education, but in life, in real life, they're still very depressed, unhappy, very unhappy, and committed suicide. yeah, they kill themselves. You know, a lot of like very highly intellectual people, they have read everything. But what is the point of reading so much when if you're unhappy, you'll spread unhappiness, right? So you don't need those education. You need basic education. But if you're literate about life, literate about like, you know, how do I become happy so that I can spread happiness? And how do I become that person so that I can help people? Hinduism and Sanatan Dharma, right? Hinduism, Sanatan Dharma is the path that will help you become that person where you can still have no education, but you will be literate more than anyone else in the world. Does that make sense? And this is very much to the point that Guruji touched earlier, that let's say we have talked so much about Hinduism and Sanatan Dharma, and then like let's say you come as someone new, and you will be like, okay, I want to become that person who is illiterate and not educated, and I want to help the world. How do I do it? The path of how is basically there you come and like ask a mentor, you know. So for example, Guruji is like a mentor to us, right? We are like, right, I want to go from point A to point B, and I'm very aspiring, I want to help the people, I want to change the world. Everyone wants to change the world, but no one is able to do it. You know, you need like a lot of like resources, you need a guiding path. And that's why I think like a mentor comes and helps you, a mentor who is already educated in that Sanatan Dharma, Hinduism. So a lot of like people who follow Guruji, they say, I've spoken to a lot of people, and they say that we are not able to understand what the scriptures say. It's written in Sanskrit, it's like thousands of years old. How do we do that? And we say that you don't need to read that because you have a walking, talking scripture. He's a walking, talking scripture. He has read that. He leads that life. Just follow his advice. And you don't have to blindly follow his advice. It's like you talk to people who have already followed it and have they achieved it, you know. So once you see that, okay, right, that might be the case, so we can kind of do that. But sorry, going back to the point about Prime Minister Modi, as of now, you know, G20 is happening in India at the moment. And G20 is like basically he's leading like the top 20 nations in the world, and the whole world looks up at these 20 countries to lead them, you know. And it's a big thing that 70 years ago, India got independent 75 years ago from like, let's say, a very third world country where people still have in the West the images that India is a poor country. You know, they make movies like Slumdog Millionaire. They think everyone lives in slum. From that to make this India superpower, where like, I think it's a credit to the Prime Minister. And what Guruji also said that being a Prime Minister, you have a lot of opposition members. They try to bring him down. They try to slander him. They try to, you know, it's a battle. He has to fight the battle for the people, but is also fighting that battle against the opposition. So I think that Hinduism and Sanatan Dharma makes him that person, that he's relentlessly trying to, he knows that his mission is serving people. As long as he's right on his mission, everything else will just fall back. And no one can do 100% right in this world. No one is perfect here. But question is that you have 4 ways to go your home, and at one रास्ते पे एक shooter AK-47 and one पे bomb and one पे तलवार या knife और एक पे थप्पड़ slapping. तो आप कहाँ से जाना पसंद करोगे? And I think अभी जो भारत की हालत है
उस स्थिति में ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड नरेंद्र मोदी, एंड ही इज़ डूइंग फॉर होल कंट्री। तो बहुत सारी जो योजनाएं हो सबके लिए करते हैं, और एक राजा का या एक शासक का काम भी यही है, वो सबके लिए सोचे, बट अपनी संस्कृति का बढ़ावा मिले और अपनी संस्कृति से पूरी दुनिया को लाभ मिले, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। बट जिनको वो अच्छे नहीं लगते, मैं ये नहीं कहता कि महंगाई कुछ होगी तो कुछ और कम किया जा सकता है, उस पर उनको वर्क करना चाहिए, वो कर भी रहे होंगे क्योंकि गरीबों को उन्होंने देखा है। बट वो इंडिया को, भारत को साउंड बना रहे हैं। इतना दिखाई पड़ रहा है कि भारत सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से अब साउंड हो रहा है, ये दिख पड़ रहा है। तो पर्सनल हेट हो सकता है किसी का, बट एज ए कॉमन पीपल एंड इंडियन पीपल, सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। दैट्स वाई वो 2 बार से प्राइम मिनिस्टर यहाँ के हैं, और पीपल अभी भी उनको लाइक करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पर्सनली मुझे लगता है कि वो भारतीय संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, और भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में हैप्पीनेस ला सकती है। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस। वसुधैव कुटुंबकम, और सबके लिए हम काम करते हैं, सब मेरे हैं, सब हम सबके हैं, हम सब एक ही गॉड की संतान हैं। दैट्स वाई वी आर सहोदर भाई, सहोदर ब्रदर, हम अलग समझते ही नहीं। तो यहाँ पर कोई नफ़रत की बात नहीं है, हेट स्पीच, हेट का कोई स्थान नहीं। धर्म में केवल लव है, शासन में केवल लव है, और यही हमको सिखाया भी जाता है, यही हमको प्रैक्टिस भी करना चाहिए। क्षुद्र स्वार्थ के लिए हम जो ये गलतियां करते हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य, उनको मिनिमाइज और उनको एडजस्ट करने का जो एक पावरफुल साधन है, उसको हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं। और स्पिरिचुअल लीडर और स्पिरिचुअल मास्टर आपको अपने प्रेजेंस में उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, और एक दिन आप भी इनको एडजस्ट करना सीख जाते हैं। क्योंकि आप काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मात्सर्य हटा नहीं सकते, ये कुछ भी मिट नहीं सकता शरीर के रहते हुए, बट एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी मात्रा में रहनी चाहिए, कहाँ उसका प्रयोग करना चाहिए। तो ये बहुत ट्रिकी बात है। स्पिरिचुअल लीडर मीन्स ट्रिकी लीडर, वो ट्रिक से आपको हैप्पीनेस की ओर ले जाएंगे, बट यू हैव टू सरेंडर देम। आपको सरेंडर करना होगा, उनको वॉच करना होगा, उनसे सीखना होगा और चलना होगा। अगर ये कार्य हो गया तो सभी लोग सुखी हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। बट इट्स नॉट गुरुडम, ये कोई गुरुडम नहीं है कि मैं गुरु जी हूँ, मेरा ये होना चाहिए। मतलब बहुत ऑर्डिनरी पीपल, उन्होंने सीखा है, उन्होंने भी पाया है, कहीं से प्रैक्टिस किए हैं, मेहनत किया है, उसका परिणाम उनके जीवन में दिखाई पड़ता है। अ परफेक्ट स्माइल, वो हर कंडीशन में स्माइल करते हैं, ऊपर से नहीं, नॉट लाइक एयर होस्टेस, ही स्माइल्स फ्रॉम हिज इनर साइड। तो वो स्माइल चाहिए फ्रॉम हार्ट। वो स्माइल स्पिरिचुअलिज्म का रिजल्ट है, और ये स्माइल वेतन का रिजल्ट है। मुझे जो पे किया जा रहा है कुछ पैसे, उसके लिए स्माइल करना पड़ रहा है, बट वो स्माइल परमानेंट हो जाए, इसके लिए एक स्पिरिचुअल गुरु की ज़रूरत थी, है, सदा रहेगी। हम तो ये कॉन्वेंट में भी बिना टीचर के नहीं पढ़ पाते, तो इतनी बड़ी पढ़ाई जिससे हमको हैप्पीनेस मिलना है, विदाउट गुरु इट्स नॉट पॉसिबल। गुरुजी, बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि मतलब आप, जैसे गुरुजी ने कहा कि ये कोई गुरुडम की बात नहीं है कि आप किसी को जस्ट गुरु मान ले और पूजा करें। ये इन्होंने उस चीज़ को अटेन किया है और एक्सपीरियंस किया है, और वो जो हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस वो है कि जो हमेशा एक एंडलेस ब्लिसफुलनेस, जिससे हमने शुरुआत की थी इंटरव्यू की, वो एंडलेस ब्लिसफुलनेस उन पे हमेशा रहता है, बस ऊपर से नहीं जैसे किसी एयर हॉस्टेस के चेहरे पे रहता है, अंदर से भी। गुरुजी, एक लास्ट सवाल ये है कि क्या गुरु होते हुए ऐसा आप में अभी भी कोई इम्परफेक्शन या ड्रॉबैक है जिस पे आप काम कर रहे हैं, या कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है जो आप कन्फेस कर सकते हैं, हाँ ये हमारे में अभी कमी है? Nobody is perfect here, including me. जी, No one. कोई और परफेक्ट बनने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को हैप्पी बनने के लिए कोशिश करना है। परफेक्ट बन के क्या करेंगे? इतने सिद्धांत, हमने एक फिल्म देखी थी मेजर लाठी, किसी फिल्म में इतना ज़्यादा सिद्धांत लेके चलता है कि जीवन भर दुखी रहता है। कायदा नंबर 125,
कायदा नंबर 127, कायदा नंबर 521, कायदा में ही ज़िंदगी चली गई, बट वो हैप्पी नहीं फील कर पाए। मुझे नहीं लगता कि कायदा कानून, ये कायदा कानून इसलिए है कि मैं हैप्पी हो सकूं। ये संविधान इसलिए बनाए जाते हैं कि मनुष्य हैप्पी हो सके। मनुष्य के लिए संविधान है, संविधान के लिए मनुष्य नहीं बना है। मनुष्य के लिए नियम बने हैं, नियम के लिए मनुष्य नहीं बना है। सब कुछ का सेंटर पॉइंट मनुष्य है, ह्यूमन है, उनकी खुशी है, उनका आह्लाद है। मेरे में बहुत सारी कमियां होंगी, मैं हो सकता हूँ नाराज़ हो जाता हूँ, बट नाराज़ होना इसलिए सही है कि कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट से अगर 100% राज़ी हो गया, दैट मीन्स वो भी टीचर हो गया। तो जिस दिन मैं नाराज़ नहीं हूँ किसी से, दैट मीन्स वो एक गुरु हो चुके हैं। और अगर गुरु नाराज़ हैं तो गुरु 99% अपने शिष्य से नाराज़ रहते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों से नाराज़ रहते हैं, इट्स नॉट गुड, ये मत करो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको विरोधी हैं और वो उनका ड्रॉबैक है। पर हाँ, इसमें कभी कभी अगर आप पूर्वाग्रह में हैं तो किसी के प्रति ज़्यादा क्रोध व्यक्त कर देंगे। मुझे लगता है ऐसे तो कुछ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, बट मैं भी बहुत एक आम इंसान की तरह जीता हूँ और अभी भी ट्रैवलिंग करने का, एंजॉय करने का, रास्ते में चलते चलते बड़ी एक प्यारी चीज़ आपको बताऊँ, रास्ते में चलते चलते कभी मूड हो गया कि किसी के साथ थोड़ा मस्ती कर लें, तो कोई जा रहा है स्कूटर से या मोटरसाइकिल से, तो मैं अपनी गाड़ी को रोकता हूँ। रोक करके, यद्यपि मैं रसियन जानता नहीं, पर एक ऐसी भाषा बोलता हूँ, तो वो अचानक इंडियन आर्मी से खड़ा होकर के, आई डोंट, बाबा हम नहीं जानते हैं कौन भाषा में बोल रहे हैं, इंद्रिया ऐसा जंद्रो न बंद्रो असत्रमथ संतरों बात रख दो। तो आपस में बोलते हैं, चाइनीज लगा थे का, चाइनीज लगता है ऐसा करके। तो ये एक मस्ती है, लेकिन फिर मैं उनको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से हूँ और आपसे मस्ती कर रहा था, और खूब हंसते हैं। तो एक देखो, एक बात मैं कहता हूँ, लाइट टू लाइट की यात्रा है आध्यात्म। LIGHT, लाइट, प्रकाश, जहाँ डार्कनेस नहीं है, एंड लाइट LIT, हल्का फुल्का। जिसके पास लाइट होगा उसकी लाइफ बहुत लाइट होगी, और जिसके पास लाइट नहीं होगा उसकी लाइफ बहुत हेवी होगी, भारी होगा, स्ट्रेस होगा। तो लाइट जीना है, और ये लाइट गुरु से ही सीखा जा सकता है। LIGHT to LIT, this is real spiritualism in common word. So I'll just conclude that like this great podcast. The last question that I asked him, that despite being a guru, do you have any imperfection? And then he answered something which is like so true when you think about it. He's like, no one should try to become perfect. When you try to become perfect, you are a human, so you can't achieve perfection. You should try to become happy, and happiness is the end goal. And happiness is the end goal of a guru as well. So he talks about a lot of, like, for example, Guruji said that sometimes he gets really angry at people, and that's one area he's working on. But then he said that there's a reason behind that anger as well. It's for the benefit of the people who follow him, because they consider him as an ideal. So that anger is not out of frustration or anything. He has reached that control. And then he also narrated an incident sometime that, like, you know, this is a very much a lighter side, where he's like traveling from a car, and then like all of a sudden he feels an impulse that to talk to someone as a stranger on the road, and he starts talking in like some foreign language. People think he's speaking Russian, and then he says that, no, I'm just taking a light. So basically the end was that he said that it's a journey from light to light, and light is basically LIGHT to LITE, and the whole objective is not to lead a very serious life, but a very, very light life. And the way you lead that light life is basically to be with a guru. Thank you so much. मैं उनसे एक प्रश्न मैं भी कर लूँ उनसे। भारत आकर ऐसे बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते रहते हैं विदेशों से। यहाँ पे वो परिक्रमा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, काउज़ की सबकी हेल्प भी करते हैं। आप भी जब यहाँ पे आई हैं, वो काम करने का आपका इरादा है, यू आर वेरी मतलब एनिमल लवर, आप उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सभी प्राणियों में भगवान का वास होता है। तो आप यहाँ आकर वृंदावन में या भारत में ये जो कार्य करना चाहती हैं, इस कार्य को लोग सपोर्ट करें,
आपके साथ लोग जुड़ें, इसके लिए आप भारतवासियों को या वर्ल्ड के लोगों को या अपने यूके के लोगों को क्या कह सकती हैं कि मैं और इस आश्रम का जो ये आश्रमिक जीवन है, ये आश्रम उसमें क्या योगदान कर सकता है, हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं, हम कैसे जुड़ सकते हैं। आप मुझसे कितना जुड़ो ना जुड़ो ये बड़ी बात नहीं है, हम आपसे जुड़ के कैसे सबकी सेवा करें ये आप मुझे बताइए। Basically, so see, we all know that your passion is to protect animal welfare, loving animals, right? You came and you saw the condition of animals, right? Let's say that you want to come and make a change. You want to come and uplift the animal. You want to come and like make this change about the welfare and stuff, right? So there are two questions. One is basically what's your plan about this, and what support, what help, what do you need from us, from the ashram, to help you execute that plan? Second is, what is your message to the people? Like, let's say a lot of people are watching this in India, in abroad. What is your message to the people so that they can get aware and they can help you in your mission? Yeah. That's it. So already in the UK, what I do is I put out information on social media, and I know that it will make people that eat meat feel uncomfortable. And actually that's the point, because sometimes you need to make people feel uncomfortable. I think in terms of yourself and your voice, and the influence that can have on this community in terms of picking up rubbish, putting it in bins, and making sure that the animals do not have access to that. And so I think that is really important, and I think you also now have a Prime Minister who seems to share that vision. And that's what we need, is we need a collective of people fighting for the injustices of animals. In terms of people at home, what I would say is Guruji has a cow shed, so he's protecting a small amount of cows, he's looking after them and nurturing him. And I know that with more funding, that vision will get bigger, because Guruji very much comes from that pure place. So in terms of what I can do, I can go back to the UK. I'm here, I'm sharing this in terms of, there's a better way to life. We don't need to eat meat. We can get nutrition from plant food. And that for me is the future. Thank you. Remember one thing, it's a light thing. We are also social animal. Yeah. यहाँ पे कहा जाता है man is a social animal. We are social animal. Yeah. So we all are doing for this whole social animals. Yeah. So including human, including those animals, and cows and like dogs and donkeys and whatever you are, even lion and tigers, everybody, and ants. In our Sanatan spiritual dharma, ants, we give them a sugar for eat them and good. So this is our lifestyle for Sanatan dharma. So I am very happy, और हम दोनों मिलके, हम सब मिलकर एक बड़ा काम करेंगे। आनंदम धाम इस कार्य के लिए बहुत वर्षों से काम कर रहा है, और आज आपसे मिलकर और हम यूके से जुड़कर, बिकॉज अ कॉमन मैन इज़ पावरफुल मैन, आई नो अ कॉमन मैन इज़ पावरफुल मैन, आई एम अ कॉमन मैन, एंड बिकॉज आई एम प्रैक्टिसिंग हिंदुइज़म एंड रियल स्पिरिचुअलिज्म, तो पावर मेरे साथ धीरे धीरे आता जाता है। तो एक कॉमन मैन ही पावरफुल मैन होता है, और हम सब पावरफुल बनकर इस कॉमन मैन का हेल्प करें, खुद एंजॉय करें और पूरी दुनिया को एंजॉय में रखें, खुद हंसें और दुनिया को हंसाएं। मैं एक बड़ा सुंदर हिंदी गाना गाता हूँ कभी कभी। जिस रास्ते से तो निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट
सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान हो गुरुवर, गुरुवर स्पिरिचुअल लीडर, बाकी सब कंगाल। अब आगे चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल, ये अलग अलग बातें हैं, बट ये इसका मतलब ये है, अगर मेरे भीतर में हैप्पीनेस होगा, मेरे भीतर में गुलाब का सुगंध होगा, तो मैं जहाँ जाऊँगा उसको स्प्रेड करूँगा। मेरे भीतर में अगर दुर्गंध होंगे, अनहैप्पीनेस होगा, सैडनेस होगा, तो मैं जहाँ जाऊँगा लोगों को सैड कर दूँगा। तो पहला काम है खुद को हैप्पी बनाना, और खुद को हैप्पी बनाने के लिए गुरु की ज़रूरत पड़ेगी ही, लिविंग मास्टर की। ये काम होते ही हम सारी दुनिया को हैप्पी बना सकते हैं। एंड हम सब मिलके अब यही काम करेंगे। पहले हम थे, मैं था, सौरभ थे, आप थे, अब हम मिलके हम हो गए हैं। ऐसे ही हम होते जाएंगे। आनंदम धाम रेगुलरली इस चीज़ के लिए काम करता जाएगा। यूके में आप लोगों को बोलना, और यहाँ मैं देखता हूँ, हम सब मिलके काम करेंगे। Thank you. Before Saurav translates, just one thing I want to say is it was several months ago I said a prayer about I want to help animals. I want this to be a kinder world to animals. And I actually believe it's no coincidence that I'm here today sitting in this ashram doing this interview with Guruji, because I think hopefully the audience here, we are having an impact on you. Oh, very nice. Yeah, so I think we'll just wrap up this first podcast. It was a great, great interaction with one of the biggest spiritual leaders of India. And for someone who has just come from UK with like no knowledge absolutely about India culture and Hinduism, it has been like an amazing sharing experience. Thank you so much. And watch out for the next podcast very soon. Namaskar.